Hey guys, welcome back to my channel. Today we are discussing about William Shakespeare part 4. We have uploaded near about 3 videos on William Shakespeare. Now I am going to discuss about William Shakespeare's play. I am starting the most famous play of William Shakespeare, which you have, I think, you have read about it. The play's name is King Lear. King Lear. I am starting this play because this play is mostly read play, and this play is so beautifully written by William Shakespeare, and the story is also very good. It's a story about King Lear, and the written time is 1605. Okay, King Lear, a king. I am trying to draw a picture of kings. Okay, he is a king of England. Okay, he has three daughters. Okay, three daughters. My drawing is not good, but I am trying to do a work because in written form I think you are not understanding well, but I am going to draw some pictures so that you can imagine. He is King Lear. Okay, King Lear. He is King Lear. He has three daughters. First of all, I draw a picture of the daughters, then I discuss in. I think you understand these pictures. These are the three daughters of King Lear. I'm trying to give them another shape so that you can understand it very well. These are the three daughters of King Lear. The first daughter is Gondril. She is Gondril. 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 And the another is Regan. Regan. And the third is Cordelia. I have made a very bad picture of Cordelia, but she is a good character in the play, okay? Don't misguide it. He is King Lear, she is Gondril, Regan, and Cordelia. I have given Regan straight here, okay? And Gondril some flattery here. And I trying to draw a good picture of Cordelia, but I think she is not looking good, but she is a good character. Okay, good character. She is a good character. She is a rigid character, not good. Okay, and she is also not good character. I think you understand it. He is a King Lear, Gondrel. Try to understand Regan and Cordelia. It's a family of, and Gondrel is married to Duke of Albany. Okay, Gondrel. She is married to Duke of Albany. Okay, she is married to Duke of Albany. If you want, I drew a picture of Duke also. I try to draw a picture so that you can understand. He is a Duke of Albany. Who? Duke of Albany. I'm trying to give you a draw version because in written form I think you forget about the topic, but in the drawing form I think you understand the best. Okay, and Regan 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 is married to
Regan is married to Duke of Cornwall. Duke of Cornwall. Cornwall. She is a Gondrel. Okay, it's a trick to learn Gondrel. She is married to Albany. Gondrel is married to Albany, and the Regan is married to Duke of Cornwall. The name Gondrel and Cornwall are not related to each other. Try to G. Not try to understand it. G is not married to G. Okay, it's only a trick. Okay, and the third good character. Who is she? Cordelia. He is married to. I try to draw a good picture of Duke. Okay, in England there are the Duke like this. He is a Duke. Okay, he is a Duke of France. Duke of France. France. Duke of France. Okay, I am going to give you again the knowledge. King Lear. He is King Lear. He has 3 daughters, Gondrel, Regan, Cordelia, and Gondrel is married to Albany and Regan is married to Cornwall, and the Cordelia, she is a good character. She is married to Duke of France. Okay, these are the characters, and some and 2 or 3 characters are more which I discuss about in next page. Okay, now I am going to give a picture of another character. He is Earl of Kent. Earl of Kent. Okay, Earl of Kent. Earl of Kent. He is Earl of Kent. He is Earl of Kent. Earl of Kent. Earl of Kent. He is Earl of Kent. Okay, he is a good character. Good character. He is a good character. Earl of Kent. He is also a good character. In disguise. Okay, I am trying to write it here. In disguise. In disguise, he take the role of Cassius. Okay, in disguise, he takes the role of Cassius. Okay, he is a one character but play the double role in the play. Okay, and another character in this play, Earl of Gloucester. Now I am going you the knowledge about these characters and the story. First of all, King Lear. King Lear, he has 3 daughters. Okay, 3 daughters. These are Gondrel, Regan, Cordelia. These are the 3 daughters. King Lear is a flattery person. Likes to flatter. Likes flattering. Okay. King Lear likes flattering. King Lear, I am going you the knowledge in Hindi also. Okay, King Lear, he likes flattering. इसको उनको चापलूसी पसंद है. Okay, he organize a play, organize a ceremony. Okay, he organize a ceremony that who loves him the most. Okay, he organizes ceremony. In this ceremony, he announces that he will divided his kingdom among 3 girls, but he will give the kingdom to who will flatter him, who will give loves him a lot. He gives him. उसने ये कहा जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करता है मैं उसको सबसे ज़्यादा क्या करूँगा, मतलब उसको ही अपना किंगडम दूंगा. He thinks about it, and he then Gondrel and Regan, these are the
they make a false opinion about King Lear. He gives a flattery opinion about King Lear. उन्होंने उनकी चापलूसी की, आप हमारे लिए ये है, आप हमारे लिए भगवान है, कुछ भी है, ऐसे जो चीज़ मतलब किंग लियर को पसंद है उन्होंने ये की, क्योंकि वो लालची थी दोनों। उन्होंने उनकी फ्लैटरी की। और कॉर्डेलिया इज़ अ गुड पर्सन, शी सैड एज अ डॉटर, अगर जैसे एक डॉटर एज अ डॉटर लव्स हिज फादर, जैसे एक डॉटर अपने फादर को प्यार करती है, मैं वैसे ही करती हूँ, और कोई एक्स्ट्रा बात नहीं है। किंग लियर गेट्स एंग्री अबाउट द आंसर ऑफ कॉर्डेलिया। किंग लियर को कॉर्डेलिया के आंसर से बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। ही डिवाइडेड हिज किंगडम अमंग गॉन्ड्रिल एंड रीगन। वो क्या करते हैं, गॉन्ड्रिल और रीगन के अमंग क्या कर देते हैं, अपना किंगडम डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद देखो क्या होता है, जो किंग लियर है, ही डिवाइडेड हिज kingdom, but Earl of Kent, he is a good character. Okay, Earl of Kent is also a good character and well-wisher of King Lear. Okay, understand this. Earl of Kent is a good character. He is a well-wisher of King Lear. He asked King not to do this with Cordelia. Cordelia के साथ आप ऐसा मत कीजिए. She is also your daughter. But King Lear don't listen to him. Okay, King Lear don't listen to him, and he divided his property among the two. Okay, whom Gondril and Regan. He divided his property among Gondril and Regan. Next, if we talk about Gondril get married to King Duke of Almany, and Regan get married to Gonwell. Okay, Gonwell. Whom? Gonwell. Now Cordelia who married to Duke of France. He is also a good character. Okay, good character. He got married to Duke of France. Duke of France takes Cordelia to her palace, and now the story begins. Now King Lear is alone with his 100 knights. Okay, with his 100 knights. He thinks that after dividing his kingdom among two daughters, he thinks he will spend half time with Gondril and half time with Regan. He informs Gondril that he will come to her with his 100 knights and stay with her. Gondril gets angry about the King Lear's answer. She asked King, she will tolerate him but not his king knights. Okay, and King gets so upset about the reactions of Gondil. He tries to go Regan. Then he wants to go to Regan. अब वो क्या सोचता है, मैं रीगन के पास चला जाऊंगा. Gondril first calls Regan. She writes a letter. There was no calling that time. Gondril write a letter to Regan that she tell about King Lear and his knights that they are coming to Regan. She also tells about that she has not the problem with King Lear. मेरे को King Lear से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उनके साथ जो ये 100 नाइट्स है ना, उनके साथ प्रॉब्लम है. रीगन को भी वो पहले इन्फॉर्म कर देते हैं भी अब उनके फादर उनके पास आ रहे हैं. रीगन ऑल्सो बिहेव्स नॉट गुड टू King Lear. King Lear got hearted about this. Okay, now Earl of Kent, who is a good wisher of King Lear, he टेक्स अ रोल ऑफ कैसस. वो एक कैसस का रोल ले रहा है, जो कि पुअर पर्सन है, उसका रोल अदा कर रहा है. वो कॉर्डेलिया के पास जाता है. ही गोज टू कॉर्डेलिया एंड टेल्स हिम द कंडीशन ऑफ हिज फादर. वो उनको बताता है भी उनके फादर की क्या कंडीशन हो रही है. ओके, ये स्टोरी के बारे में उनको बताता है. उसके बाद क्या होता है, कॉर्डेलिया गेट्स एंग्री अबाउट द situation of his about to hear the situation about his father. She gets angry. She asks his husband Duke of France and takes a military. ओके, वो एक सेना लेके जाती है. उसके बारे में इससे पहले एक कहानी है जो मैंने अभी डिस्कस नहीं की, जिसकी वजह से सारा होगा. इसमें एक और कैरेक्टर है जो अर्ल ऑफ ग्लोसेस्टर. ओके, अर्ल ऑफ ग्लोसेस्टर. आई थिंक आई शुड टेक अनदर पेज. ओके, now this is the character. The character is Earl of Gloucester. Earl of Gloucester. Okay, Earl of Gloucester has two sons. Okay, two sons. First is
Edgar, and the second is Edmund. Edmund is a bastard son. Bastard son means najayaz, not good. Edgar, good person. Okay. And Gondril, और जो है ना, देखो Gondril and Regan. Gondril and Regan, they got flattered by whom? Edmund. ओके वो दोनों क्या हो जाती है, एडमंड से बहुत ज़्यादा फ्लैटर्ड हो जाती हैं, एडमंड के साथ वो रिलेशन बनाना चाहती हैं, तो वो क्या हो जाती हैं, अब एक दूसरे से ही वो जेलसी करने लग जाती हैं। ओके दूसरे से इसके बारे में, एडमंड के बारे में। इससे क्या होता है, Gondril एंड रीगन died due to the love for Edmund. पहले देखो रीगन की डेथ होती है, रीगन की डेथ हो जाती है क्योंकि एडमंड से वो प्यार करने लग जाती है। दोनों मैरिड हैं, दोनों ही मैरिड हैं, पर फिर भी वो एडमंड के पास मतलब फ्लैटर्ड हो जाती हैं उनसे, और उनसे पाना चाहती हैं। दोनों की ही डेथ हो जाती है, क्योंकि जब रीगन की डेथ हो जाती है तो जो गॉन्ड्रिल के हस्बैंड को पता लग जाता है, जो ड्यूक ऑफ एल्मोनी है उसको पता लग जाता है, तो वो मतलब ये सुसाइड कर लेती हैं, ऐसे ये मतलब सुसाइड कर लेती हैं, इससे इनकी डेथ हो जाती है। ओके उसके बाद क्या होता है, जब वो हमारी जो कॉर्डेलिया है वो क्या करती है, उसको बांध दिया जाता है। ओके उसको बांध दिया जाता है, तो उसकी भी डेथ हो जाती है इस प्ले में, उसकी भी डेथ हो जाती है इसमें। और उसके बाद क्या होता है, जब किंग लियर को भी पता लगता है कि कॉर्डेलिया की भी डेथ हो गई है, वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, और उसके बाद क्या हो जाती है, किंग लियर की भी डेथ हो जाती है। देखो किंग शेक्सपियर की बात हो रही है, अगर ब्लड शेड वगैरह ये मतलब डेथ वगैरह ना हो, ये बात तो हो ही नहीं सकती। शेक्सपियर के प्लेज में ये सब कुछ तो चलता ही चलता है, इससे मतलब मोस्टली सबकी डेथ हो जाती है, और जो बच जाती हैं उसके बाद जो किंगडम कौन चलाते हैं, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कैंट ये चलाते हैं, एक कैंट हो गए, अर्ल ऑफ ग्लोसेस्टर ये चलाते हैं, एंड द अनदर जो गुड बेटा है उनका एडगर। ओके 3 persons became 3 person, फर्स्ट द कैंट, ओके सेकंड इज फर्स्ट इज कैंट, सेकंड इज एडगर गुड सन ऑफ ग्लोसेस्टर, एंड द थर्ड इज ग्लोस्टर। ओके ये तीनों मिलकर अब किंगडम चलाते हैं, किंगडम चला रहे हैं। ओके ये देखो ये स्टोरी है किंग लियर के, मैंने जस्ट आपको इन डिस्गाइज आपको कोशिश की, और मेरी कोशिश होगी मैं ऐसे ही आपको करवाने की कोशिश करूं ताकि आपके दिमाग में बढ़ जाए। बहुत अच्छी कहानी है, सबकी डेथ हो जाती है, कौन बच जाते हैं, अर्ल ऑफ कैंट बच जाते हैं, ग्लोस्टर बच जाते हैं, और एडगर बच जाते हैं। ओके बाकी सबकी डेथ हो जाती है, जो रीगन है और गॉन्ड्रिल है वो एडमंड के कारण डेथ हो जाती है उनकी, और जो हमारी कॉर्डेलिया है उसको मतलब बांध के रख दिया जाता है, वो इसकी वजह से मर जाती है, और जो किंग लियर है वो अपनी बेटी कॉर्डेलिया के गम में मर जाते हैं। ऐसे ही स्टोरी है, ऐसे ही चैनल के साथ बने रहें आप, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।